morning, team. Yesterday, Fed meeting, chairman indicated moderating pace of rate increase, and it might come soon as December meeting. We have RBI meeting also in December. So, dovish comment from Fed has rallied global markets. So that will have a rub-off effect on Indian markets. So expect rates and sensitive stocks to outperform from here. Auto and banking are two sectors I think will do very good. Today we will have auto numbers coming out, and Ashok Leyland and Eicher Motor market is expecting 30% above growth. Now, Chennai-based Manli Petrochemical has acquired UK-based Penn Global for 21 million pound. Penn Global is a market leader in control agent and chemical product like lubricant, surface coating, release agent, and silicone emulsion. Now, MGL, IGL are beneficiary from the Parik panel gas pricing. So now we are positive after a very big correction. I think IGL, MGL, even Gujarat Gas looks very good at current level. There was a World Bank data. The data says that India's remittances for calendar year 22, we are in the December month. It says it will cross $100 billion, and the nearest competitor is near $50 billion as per World Bank. Last year, we collected about $87 billion as remittances. So it is a 12% jump over that. So this is something positive. As exports are reducing, remittances are helping us to cope up. India-Australia free trade agreement will come into force by December 29th. The trade between two countries is expected to cross $45 to $50 billion in 5 years time frame. So already we have ongoing trade between India and UAE where our exports are increasing. NMDC news. Now it is not only iron ore price hike of 360 per ton. There is a Supreme Court order which has come yesterday. I have posted in all the groups. This NMDC, there was a case which was in 1996 for diamond mining activity in Panna. It is a very old case where in 2005 also there was a few data which were given to the Supreme Court, and it was in multiple courts. Now Supreme Court has allowed. It should be very positive along with the price hike. In the last news, discounts outstanding, it has reduced by 24,689 crores. So now the outstanding is 1,13,000 crores in the last 6 months. This is what Power Ministry has said. And distribution companies have almost paid 1,68,000 crores in the last 5 months. So they are not keeping any pending. So now the collection is very efficient. That means power supplying company, power manufacturers like NTPC, Torrent Power, Tata Power, NHPC, SVJN, these are likely to be benefit. We are very positive on NHPC being a green energy, and they will be doubling their capacity. But this is not for something short term. It is not for 3 months, 6 months. Somebody looking at 2-3 years, NHPC is one stock to watch out for. With that, over to you, Sitija. थैंक यू सर. गुड मॉर्निंग एवरीवन. अभी हम लोग केस कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो पहला अपडेट है वो कि ग्रोथ है 8 कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का, वो अभी 20th मंथ को लो हिट किया है. वो अक्टूबर में 0.1% था, और क्योंकि वो मतलब दिवाली, अक्टूबर में दिवाली थी तो वर्किंग डेज कम थे और अनफेवरेबल वेज प्रोडक्शन भी था. तो अभी बेस जो है फेवरेबल है अगेन, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स है उसके लिए पुश किया है, तो एक्सपेक्टेड है कि वो प्रॉप अप होगा. और जो आउटपुट सेक्टर से लाइक स्टील, सीमेंट्स ग्रोथ करेंगे ये कोर में, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है वो रिबाउंड होगी नवंबर मंथ में, और इसे एक्सपेक्टेड है कि वो 7% का ग्रोथ टच कर सकती है.
द नेक्स्ट अपडेट है सीमेंट ने रिपोर्ट किया है इनके जो वॉल्यूम्स है वो डिक्लाइन हुए 4% और ये इम्प्रूव दिस शुड बी मतलब ये इम्प्रूव होने चाहिए सेकेंड क्वार्टर मतलब हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में। और जो इम्पोर्टेड कोल प्राइसेस है वो भी फॉल हुआ है सीमेंट में नवंबर मंथ में 20% से मंथ ऑन मंथ बेसिस हम लोग कंपेयर करें तो हम लोग पॉजिटिव है सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक के ऊपर। द नेक्स्ट अपडेट है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो डेटा आया था उसमें इंडियन इकोनॉमी है ग्रो हो रही है स्लोअर पेस से जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में और जीडीपी ग्रो हुआ है 6.3% ईयर ऑन ईयर में सेकेंड क्वार्टर में। हम लोग कंपेयर करेंगे तो 13.5% था क्वार्टर वन में अकॉर्डिंग टू जो डेटा है उसके अनुसार। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो इम्पैक्ट हुआ है सब्सिडीज और इनडायरेक्ट टैक्सेस में और जो ग्रो हुआ है 5.6 ईयर ऑन ईयर क्वार्टर टू में। हम लोग कंपेयर करें तो क्वार्टर वन में 12.7% था। जो ब्लूमबर्ग का पोल है उसके अनुसार 46 जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने एस्टिमेट किया है कि सेकेंड क्वार्टर का जो जीडीपी है वो ग्रोथ 6.2% है और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड एस्टिमेटेड ग्रो है वो 5.9 है और जो नॉमिनल जीडीपी है करंट प्राइसेस में क्वार्टर टू फाइनेंशियल 22 में वो एस्टिमेट 65.31 लाख करोड़ है। जो हम लोग कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से तो वो 64.95 लाख करोड़ था। अभी जो इंडियन इकोनॉमी है वो ट्रैक पे आ रही है उन्होंने अचीव किया है 6.8 से लेकर 7 जीडीपी ग्रोथ ये करंट फिजिकल के लिए एज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आनंदनाथ नागेश्वर ने बोला गया है और ये इकोनॉमिक की जो रिकवरी मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा जीडीपी भी एवरेजिंग है 2019 और 2020 के लेवल पे और अभी 2022 और 23 में इकोनॉमी ट्रैक पे आ रही है और ये जो ग्रोथ है वो 6.8 से लेकर 7.7% ये फिजिकल में है। और उन्होंने बोला है कि जो फेस्टिवल सेल्स है पीएमआई है बैंक क्रेडिट ग्रोथ है सेल्स डेटा है वो इकोनॉमी को अच्छा मेंटेन मोमेंटम दे रहा है मतलब ग्लोबली इतने हेडवाइंस है उसके बावजूद भी। और जो आईएमएफ है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो ग्रो होगी 6.8 ये फिजिकल में और आरबीआई है उन्होंने पेक किया है कि 7% और इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ 6.3 स्लो हुई थी जून जुलाई सितंबर क्वार्टर में। अभी सेम पीरियड में 8.4% थी 2021 और 2022 में। नेक्स्ट अपडेट है टीसीएस के ऊपर। टीसीएस को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है यूके बेस्ड डिलीवरी ग्रुप से जो बिल्ड और रन करेंगी यूके गवर्नमेंट रेल डेटा मार्केट प्लेस और ये मार्केट प्लेस जो है वो एक्सपेक्टेड है कि सिंप्लीफाई करके डेटा शेयर एंड एक्सप्लोरेट करेंगे इनोवेशन इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। फिनेंशियल जो डिटेल्स है डील के वो अभी भी डिस्क्लोज नहीं किए है बट ये जो है डील 6 ईयर्स के लिए है विद ऑप्शन एक्सटेंशन के साथ। तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टीसीएस के लिए। हम लोग देखेंगे तो उनका अर्निंग पर्सपेक्टिव और प्रॉफिटेबिलिटी के अनुसार ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और कंपनी को बिलीव है कि ये जो रेल डेटा मार्केट प्लेस है वो ओनली प्रोवाइड डेटा रिलेटिंग और रेल इंडस्ट्री कोई नहीं करेंगे बट वो प्रेजेंट अदर जो डेटा पॉइंट्स है वो इम्प्रूव करेंगे कस्टमर एक्सपीरियंस से। नेक्स्ट अपडेट है कुकिंग कोल ऑयल के जो प्राइस कुकिंग कोल के प्राइसेस के ऊपर। कुकिंग कोल प्राइसेस है वो फॉल हो चुके हैं 22% से मंथ ऑन मंथ बेसिस और अभी वो है $229 टन और ये फर्स्ट टाइम है वहाँ हम लोगों ने देखा है कि मतलब फॉल मंथली बेसिस पे। जो कुकिंग कोल प्राइसेस है वो 64% फॉल हुए हैं फ्रॉम पीक मतलब उसका जो हाई था $638 टन लास्ट 9 मंथ्स में वहां से अभी ये फॉल हुए हैं 64%। तो ग्लोबल सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हो रहे हैं बट ये करेक्शन कंटिन्यू है तो हम लोग सम अमाउंट ऑफ इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी इंडियन स्टील प्लेयर्स में देख सकते हैं क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 23 में। द नेक्स्ट अपडेट है क्रेडिट बैंकिंग क्रेडिट डेटा के ऊपर। जो ग्रॉस बैंक क्रेडिट है वो राइज हुआ है 18.3% से ईयर ऑन ईयर बेसिस से नियरली 129 ट्रिलियन है एज ऑन 21 अक्टूबर 2022 तक का डेटा है। उसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है लोन एमएसएमई एंड रिटेल और एनबीएफसी के जो होम लोन से और लार्ज कॉर्पोरेट के लोन से उसके कारण पर्सनल लोन से वो भी राइज हुआ है 20.2% ईयर ऑन ईयर। लोन इंडस्ट्री ग्रो हुआ है नियरली 40% और जो लोन सर्विस सेक्टर से वो इंक्रीज हुआ है 23%।
डिपॉजिट ग्रोथ भी अदर हैंड पे स्लो डाउन हुआ है स्लाइटली 8.25%, और ये डेटा 4 नवंबर तक का है। और हम लोग को बिलीव है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव है सेक्टर के लिए, और यहाँ से हम लोग डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 23 में। और जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो भी पिकअप होगा नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में। तो हम लोग बुलिश है ये सेक्टर के ऊपर। और जो टॉपिक है वो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, फेडरल बैंक एंड सिटी यूनियन बैंक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देन नेक्स्ट अपडेट है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX के ऊपर। उनके जो शेयर होल्डर से उनको अप्रूवल मिला है बैलेट मतलब पोस्टल बैलेट से कि वो बायबैक शेयर कर सकते हैं, और जो वर्थ है वो 98 करोड़ की है। और कंपनी मैक्सिमम जो प्राइस है 200 रुपीज पर शेयर है, और जो एग्रीगेट अमाउंट है वो अप टू 98 करोड़ होगी। देन नेक्स्ट अपडेट है ONGC एंड रिलायंस के ऊपर। जो पारे के कमिटी उन्होंने बोला कि गैस प्राइसिंग है वो सबमिट करना पड़ेगा रिपोर्ट पेट्रोलियम मिनिस्टर को। और जो पैनल है उन्होंने सजेस्ट किया कि जो फ्लोर प्राइस है वो $4 पर मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट रखेंगे, और जो कैप और सेलिंग प्राइस है वो $6.5 पर MM BTU रखेंगे गैस के लिए फ्रॉम ओल्डर लीगेसी फील्ड से। तो ONGC और जो ऑयल लार्ज कॉर्पोरेट लीगेसी है ये कंट्री में, तो पैनल ने रिकमेंड किया कि जो प्राइसेस है डोमेस्टिक गैस की वो लिंक होगी इंटरनेशनल प्राइसेस से। और ये सजेस्ट मतलब कंपनी ने मतलब ये पैनल ने सजेस्ट किया है कि वो रिमूवल होगा प्राइस कैप नेक्स्ट ईयर में। देन नेक्स्ट अपडेट है IDFC के ऊपर। सेबी ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ IDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड का, जो कॉन्स्टिट्यूट होगा कंपैरिजन बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड से, GIC और क्रिस कैपिटल से। ये रिलीज हुआ है कि IDFC AMC ने बोला है कि वो प्रपोज करेंगे डील। ऑलरेडी उनको सेबी से क्लियर हुआ लास्ट मंथ RBI और के लिए ये डील को अप्रूवल दे दिया गया था। और अगस्त मंथ में ही CCI कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया ने भी क्लियरेंस दिया है। देन नेक्स्ट अपडेट अपोलो हॉस्पिटल के ऊपर। हॉस्पिटल चेन ऑपरेटर जो अपोलो हॉस्पिटल है उनको एक बोर्ड ऑफ अप्रूवल से रिसीवेंस मिला है कि वो फंड रेज कर सकते हैं 105 करोड़ का वाया नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स NCD से, और वो कंपनी इशू करेंगी 1050 NCDs, और जो फेस वैल्यू होगी वो ₹10 लाख ईच। देन नेक्स्ट अपडेट है NMDC के ऊपर। NMDC जो कंपनी है उन्होंने आयरन और जो लम्स है उसमें प्राइस हाइक की है, और जो फाइन अभी है वो 300 पर टन है, और ये इमीडिएट इफेक्ट है जो इमीडिएट होगा। और ये गवर्नमेंट ने ये आफ्टर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है मिनरल्स के ऊपर वो रिमूव करने के बाद आयरन और प्राइस में ये प्राइस हाइक देखी गई है। इसके अलावा NMDC के ऊपर और एक अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट का जो केस चल रहा था उनका 1996 में डायमंड एक्टिविटी में पना में, तो वो भी कुछ उनका क्लियरेंस, बहुत सारे मल्टीपल कोर्ट में केसेस चल रहे थे, तो वो भी कल अपडेट आया उसके बारे में कुछ, तो वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है NMDC के लिए। देन नेक्स्ट अपडेट है कि जो फेड के चेयरमैन है उन्होंने बोला गया है कि उनका दिसंबर में मीट है, तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वो मॉडरेट रखेंगे। और इसके अलावा RBI का मीटिंग भी है दिसंबर में, तो ये जो इंटरेस्ट रेट के थोड़ा बहुत हम लोग मतलब ईज ऑफ देख सकते हैं। और इसके कारण जो ऑटो और बैंकिंग सेक्टर से वो अच्छे हम लोग को लग रहे हैं। तो ऑटो में अशोक लेलैंड है, आइशर मोटर है। ऑटो के नंबर्स आने वाले हैं आज, तो अशोक लेलैंड और आइशर मोटर में 30% के अबाउ हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्टेड कर रहे हैं। देन नेक्स्ट अपडेट है एक मनाली पेट्रोकेमिकल एक कंपनी है, वो कंपनी ने बोला है कि वो अक्वायर करेंगे यूके बेस्ड पेन ग्लोब GBP 20 बिलियन वर्थ से। और ये लेटर इज अ मार्केट लीडर है कंट्रोल एजेंट और केमिकल प्रोडक्ट्स में, जो लुब्रिकेंट सॉफ्टेक्स कोटिंग और रिलीज एजेंट एंड सिलिकॉन इमिशन पे काम करते हैं। देन नेक्स्ट अपडेट है कि जो रिमिटेंस डेटा है उस पे हम लोगों ने $100 मिलियन एक्सपेक्ट करें। जो लास्ट टाइम था वो 87 बिलियन कलेक्ट हुआ था रेमिटेंस, तो ये पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट हमारा रिड्यूस हो रहा है और रेमिटेंस है वो हम लोग को हेल्प कर रहा है, तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देन नेक्स्ट अपडेट है
अशोक लेलैंड के ऊपर कंटिन्यू उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया 2017 का जो BS4 व्हीकल स्कैम केस था, तो उसके ऊपर अपडेट था. So that's it from my end. Thank you everyone for joining the morning con call. Have a nice day. The technical and derivatives outlook. So in yesterday's session, we saw that Nifty has seen a very good amount of buying, and the index was up by 140 points, and it closed almost at 18,758 levels. So we are in line with our positive view, and we are maintaining that Nifty should be heading towards 19,000, and gradually after 19,000, it should be heading towards 19,500. So bias for the Nifty is very strongly positive. On the lower side, now the demand zone now shifts at 18,500. So, but there are a series of demand zones from 18,500 to 18,200. In case if the profit booking comes, this level will act as a very strong base support for the market. We are having a positive view on the market. So December should be a very good strong upside month for the coming month. So view is positive. On the sector specific, what we observed yesterday was metals, auto, and realty were the sectors which led to the rally. So specifically in metals, JSW Steel and Hindalco are something looking positive. Within auto, M&M and this Bajaj Auto is looking positive. In reality, Godrej Property and Over Realty. These are the counters which are looking positive. So we believe that Nifty will should be heading towards 19,000, 19,500 over the next couple of days, and 18,500 will be the lower side demand zone. Coming to Bank Nifty, what we are observing, it is taking a pause. So in the last Friday, it has made a high of 43,339, and it is just trading sideways. So Bank Nifty is also it's already given a big run, close to 16% in the last couple of weeks. So this is what exactly it is taking a breather. So we believe that Bank Nifty will also start moving up once it scales above 43,400 level. For Bank Nifty, we are having a view of 45,000, 46,000 on the higher side for the next couple of weeks. And the lower side, the demand level now shifts at 42,700 and 42,300. So these are the immediate support level for the Bank Nifty, and the major support can be seen at 41,800. So that was a breakout level from where the Bank Nifty has started to rally. So in the extreme scenario, if the profit booking comes, then that 41,800 will be the levels to watch. So only if 41,800 is broken, then slightly loss of momentum can be there, which doesn't look as of now. So both the indexes, we are having a positive view, and we believe that we should be heading much higher in the coming trading session. Coming to the derivatives data, Nifty futures has seen a long build-up to the tune of 4.23%, and this was the addition of 5.68 lakh shares. The PCR has also climbed from 1.28 to 1.55, which is also adding to the strength. The major additions were seen in the 19,000 call options by 84.42 million shares, and then 18,900 call option by 83.05 million shares. On the put trend option, 18,600 put saw OI build up by 10.72 million shares, and then 18,500 put option by 10.44 million shares. Coming to Bank Nifty, yesterday we saw a short covering in Bank Nifty to the tune of minus 0.41%, which is the decrease of minus 13,000 shares. The PCR, which was negative, which was trading below 1, has now closed at 1.03 levels, which is a point of strength. The major additions were seen at 43,000 put options by 42.37 million shares, then 42,700 put options by 22.03 million shares, and on the call option front, 43,500 call options by 31.56 million shares. So these levels will act as a support and resistance from the derivatives point of view. The top three long build-ups which were seen in yesterday's session was TVS Motor, Ashok Leyland, and Shriram Transport Finance. And the short build-ups were seen in Canara Bank, SBI, and Voltas. Coming to FI data, FIs is again added long positions. Overall, they are 75% long in the index future, which is a positive side. And the net long contracts are plus 1 lakh contracts, which is again a very strong positive side. Lastly, on the month, since yesterday there was a monthly close, PSU Bank was the month-on-month. PSU Bank was a leader. It was up by 15.59%. Then followed by metals, it was up by 11.33%.
And then oil and gas, it was up by 6.6% from month-on-month basis. Few stocks like M&M is looking positive on chart. ICICI Lombard is looking positive on chart. SBI Life and HUL. So these are the counters which are looking positive and can see some strong up move in the coming days. So that's all from my own. I'll hand over to Vishal sir for the poor research updates. Thank you. Yeah, good morning, team. Good morning, sir. So to start off with the news flows, first is core sector data number came out yesterday, and overall the number were weaker. I mean, if you look at core sector data, comprised of 8 core or infrastructure industries. So the growth rate was largely a largely flattish number. So what we understand is this is primarily led by fewer working days in the month of Diwali, because if you look at in this year, Diwali was in the month of October vis-a-vis last year when the Diwali was in the month of November. So overall during Diwali we have seen the demand for cement, steel, it goes down. Going ahead, I mean, we are expecting things will improve. Cement reported a volume decline of 4% in the month of October. This should improve in the second half. Overall, I mean, if you look at imported coal prices also fallen in the sector, and this augurs well for the improvement in margin for the cement companies in the quarter 3 numbers. We maintain our positive view and buy rating on Ultratech. Next on quarter 2 GDP growth rate numbers were released by MSO, and then if you look at the GDP growth rate, though absolute basis it was lower growth rate in quarter 2 vis-a-vis quarter 1, but this was bit on expected lines, because absolute number which has come in quarter 2 is 6.3% Y&Y growth rate. Consensus was expecting a number of 6.2, so I think there is not much of deviation or miss in terms of number, but yes, vis-a-vis the high double-digit growth of 13.5% in quarter 1 of FY23, the number of 6.3% optically is lower. But I mean, if you look at, there was a commentary from a CA economic advisor highlighting things. If you look at the indicators which include PMI, bank rate growth, then again the auto monthly numbers, overall the numbers are pointing things are going in line with expectation, or things are healthy in terms of economy is concerned. And for the full year basis, the CA advisor has guided Indian economy will grow in the range of 6.8 to 7%, which is basically in line with even RBI has also guided. Next is on bank credit growth rate data came out, and if you look at the credit growth was up by 18% on Y&Y basis, and this is basically the data is as on 21st October. The RBI report this on a fortnightly basis. I mean, within the segment, if you look at in this credit growth, the personal loan growth was up by 20% on Y&Y basis, and again loan to industry has grown by 14%. Deposit growth on the other hand, it was a little lower at around 8.2%, and I mean it has actually down vis-a-vis what it was in probably a month back. We are overall expecting credit growth is positive for the sector, and this will have an improvement in terms of loan growth with the company started reporting numbers even in the quarter 3. In first half, we already seen a pretty strong set of number from many of the banking stock and sector. So this will continue as per the credit growth data from RBI. In terms of our stock recommendation, our pick remain HDFC Bank, ICICI Bank, Federal and City Union. Next is update on the raw material side. So coking coal prices have fallen by 22% month-on-month basis. And if you look at, this is the first time we have seen such kind of fall on a monthly basis. And coking coal prices, which has fallen by in the 9 months, if you see that, I mean, after touching a $638 per ton, it has fallen by almost 60%, and it is trading at around 229 per ton. If global sentiment improves, such correction continues, then we can have some amount of increase in the profitability for the Indian cement players, Indian steel players in quarter 3 and quarter 4. So this will augur well for the steel industry as such. Next is on Bharat Electronics. So company in the media report, the CMD has reiterated that they expect order inflow from 20,000 odd crore in this year. Again, they have guided the same number for FY23 this year, and then even in FY24 also. This order book can be much more. It depends basically as per the company. It depends how the spending and the defense budget will be, because budget is around the corner. So again, that will give
more clarity in terms of what exactly the government is spending, and again that will also guide the market how the ordering can be. If you look at Bharat Electronics, so the company has around 52,000 odd crore of order book, so that continues to remain strong. And I mean, like, this augur well in terms of better execution for the company in the coming time. Last thing from my side is on auto. So auto numbers will see, I mean, most of the auto companies will start reporting numbers. Overall expectations, like an auto sales volume in November is expected to be a little weaker, and this is primarily, like, because in the last month we have seen a strong numbers due to the festive season. So this has been, like, every year phenomena, like, and after a pretty strong number of festive season, things on the next subsequent quarter it does see a softness. But yes, I mean, overall we will need to see, like, how exactly the demand panning out, and we'll keep you updated more post that. Yeah, that's all from my side. Over to you, sir. Yeah, thank you, sir. Good morning again. We'll continue with more further updates. Firstly, we'll see that in the there are 5 bidders for the Vande Bharat train, that is lightweight train for the 200 trains, and these are Alstom India, Medha Servo, Titagarh Vedanta, and Siemens. And total order bidders were of 26,000 crores. And Russia has also one bid, that is Transmas Holding, is the 5th bidder in this race. Secondly, NMDC, for NMDC, they had increased their iron ore prices, lumps prices, and fines prices by 300 per ton with immediate effect. This is after the government has removed the duty on the exports for the metal. Apollo Hospital has received approval of the raising of 105 crores for via NCDs. So the company will issue 1050 NCDs of face value of 10 lakh each. Carried by a committee on gas pricing on Wednesday submitted their report to the Petroleum Ministry. The panel suggested that the floor price of $4 per million MMBTU is a cap for ceiling, and 6.5 MMBTU from old and BBC fields. The state and ONGC and oil are largely operate in this field of the country, and it has also suggested that the removal of price cap in the next 3 years. IEX is also seeking to shareholders approval through postal ballot for buyback of shares of 98 crore rupees on 30th November, and they are going to for the share value for a face value of 1 with a maximum price of 200 per share, aggregating to 98 crores. So that's it from mine. I'll hand over to Prabhakar sir for more. Thank you.